बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिविजनल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के हवाले से कुछ नए जो है वो परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग जो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस फॉर परफॉर्मेंस मेजर्स हैं इनके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग उसी हवाले से जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जिसमें जो डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स आते हैं विच रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उनको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसमें डिलीवरी साइकिल टाइम है, थ्रूपुट टाइम है और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है। इन मेजर्स को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। Before that, we have calculated our financial performance measures. Financial performance measures were the measures which were related to the financial performance of the company or the division or the organization. Those financial performance measures were based on profitability, and we measure the profitability of the organization, of the division, and of the manager of the division. So financial performance measures, which were accounting performance measures, which were based on accounting data, they were return on investment, residual income, and economic value added. So those were financial performance measures based on accounting data. That's why they were called accounting financial performance measures. So in addition to financial performance measures, organizations use many non-financial operating performance measures, जिसमें वो operations की performance को measure करते हैं। How efficiently our operations are performing, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स कहते हैं। सो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स आर दोज परफॉर्मेंस मेजर्स which are used to calculate the operating performance of the company or the non-financial performance of the company. So we will try to understand what non-financial operating performance measures are and how they are calculated and how they are used to calculate the efficiency of the operations of the company or the division of the company. So financial measures basically measure करते हैं results of what people in the organization do. Basically financial measures guide us that what are the results of the people, what are the results of the operations of the organizations of the company or organizations or the division of the company. So in financial measures, we measure the results of what people in the organization do. It means that we measure that how the people of the organization perform their activities, how they earned or how they financially perform their performance in the organization. So financial measures are basically ये बताते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उन लोगों ने कैसा काम किया है, क्या उन्होंने इफेक्टिवली काम किया है या नहीं किया है, उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, उन्होंने कितना जो है वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है,
तो इस लिहाज से जब हम लोगों ने लोगों की परफॉर्मेंस को जज करना हो, when we have to check the results of the people, whether the employees or the managers of the organization or the division has performed well or not, that for the measurement of those results we use financial measures. So, in short, we may say that financial measures are the measures which are used to check the performance of the people of the organization. It's are the results, it measures the results of what people do in the organization. But on the other side, operating performance measure what drives organizational performance. Basically, operating performance measure में हम एम्प्लॉइज की या मैनेजर की परफॉर्मेंस को फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं. How well an organization has performed, that is basically measured in operating performance measures. दोनों में जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट है वो ये है कि फाइनेंशियल मेजर्स बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज और मैनेजर को मेजर करता है, और जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स हैं दे बेसिकली मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और डिविजन्स कैलकुलेट करती हैं. सो इस लिहाज से अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल फोकस रखना है तो फिर हमें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स को भी यूज करना पड़ेगा. सो we will use financial as well as operating performance measures to check the performance of the organization. Three three examples of operating performance measures that are critical to success in many organizations. तीन जो एग्जाम्पल्स हैं या टूल हैं परफॉर्मेंस मेजर के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको. इसके अलावा भी और बहुत सारे परफॉर्मेंस मेजर्स हो सकते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो ये तीन हैं. They are basically delivery cycle time, throughput time, and manufacturing cycle efficiency (MCE). These measures focus on manufacturers. Very similar measures can be used by any services organization that experience a delay between receiving a customer request and responding to that request. ये basically जो तीन measures हैं, they have been derived or they have been described in terms of manufacturers. ये मैन्युफैक्चरर्स को मद्देनजर रख के ये वाले तीन मेजर्स बनाए गए हैं और हम लोग इनकी डिस्कशन भी विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर्स ही करेंगे. लेकिन इसी तरह के जो मेजर्स हैं वो हम लोग बना सकते हैं फॉर द सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस भी, जिनके अंदर जो है वो अपनी जो रिक्वेस्ट हैं कस्टमर्स की उनके ऊपर जो रिस्पांस है वो डिले आता है या उनकी रिक्वेस्ट को जो है वो हम टाइमली एड्रेस नहीं करते हैं. उन चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग वहाँ पे भी अपने जो कुछ मेजर्स जो हैं वो इसी तरह के सेम मेजर्स हम वहाँ पे भी बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं. बट हेयर वी विल फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन to calculate or understand these three operating performance measures. They are delivery cycle time, throughput time, and manufacturing cycle efficiency. So here is delivery performance measures. So delivery performance measure अगर आप यहाँ पे देखें तो उसमें आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म का जो टाइम होता है जो हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज करते हैं वो मेंशन किया गया है इस डायग्राम में. सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है व्हेन वी रिसीव्ड एन ऑर्डर. तो दैट इज द पॉइंट वेयर वी रिसीव्ड एन ऑर्डर. देन वी स्टार्ट प्रोडक्शन. तो
उस वक्त फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है एंड देन एट द एंड इज गुड्स आर शिप्ड, और फिर गुड्स जो हैं वो हम भेज देते हैं अपने जो कस्टमर्स को. So here is the process or a cycle which is workflow cycle of manufacturing organization. First of all, we receive order, then we start production, and after completing the production, we dispatch goods to the customer. So these are three simple steps in our manufacturing organization. When we receive order, there will be a certain days or time which will be wait time for starting a production. So the order received and production started के दरमियान जो भी delay होगा, जो भी waiting time होगा, हम उसको wait time कहेंगे. हम ऑर्डर, सपोज हमें ये ऑर्डर मिला 1 जनवरी को और हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट की 3 जनवरी को उस ऑर्डर के ऊपर, तो वो जो 2 दिन का टाइम है दैट इज कॉल्ड वेट टाइम. फिर हमने ये कहा प्रोडक्शन टाइम के से और गुड्स शिफ्ट के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस आते हैं उनके ऊपर जो टाइम कंज्यूम होता है उनको हम लोग प्रोसेस टाइम बोलते हैं. फिर हम इंस्पेक्शन टाइम होता है, फिर मूव टाइम होता है और फिर क्यू टाइम होता है. तो हम लोग बारी बारी इनकी डेफिनेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे. Process time is the time which is used to manufacture a product, which is the processing time of the product. Inspection time is used to inspect or to check whether the production is up to mark or up to standard. Move time is the time which is used for moving the product from one workstation to the other workstation or one machine to the other machine. And the queue time is the waiting time which a unit gets while the workstation is working on other units. उसको हम लोग queue time बोलते हैं. So when we plus all these 4 terms, process time, inspection time, move time and queue time, that is called throughput time. And when we add throughput time and wait time, that is called delivery cycle time. तो इनको हम कैलकुलेट करना भी और इनको डिटेल में डिस्कस भी हम अगली स्लाइड में करेंगे. So process time is the only value added time. In this whole diagram, there is only one time which is value added time, which adds value to the product. वो जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस टाइम होता है. बाकी जितने भी टाइम हैं वो बेसिकली नॉन वैल्यू एडेड टाइम है. वेट टाइम वे भी ये नॉन वैल्यू एडेड है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही इस वक्त में एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोसेस में से जो एक जो ऑर्डर के ऊपर. फिर इंस्पेक्शन टाइम भी नॉन जो है वो वैल्यू एडेड टाइम है बिकॉज इसमें भी कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही. फिर मूव टाइम इज आल्सो अ नॉन वैल्यू एडेड टाइम एंड क्यू टाइम is also a non-value added time. So for the calculating of manufacturing cycle efficiency, we need value added time and we divide it by manufacturing cycle time. फिर हम लोग वैल्यू एडेड टाइम को जब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का नाम देते हैं. सो हियर वैल्यू एडेड टाइम इज ओनली प्रोसेस टाइम. तो प्रोसेस टाइम को हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, हियर इज आवर एग्जांपल. Operating performance measure illustration. To provide an example of these measures, consider the following data for Novex company. Novex company keeps careful track of the time to complete customer orders. During the most recent quarter, the following average times were recorded per order. Wait time is 17 days. Wait time मैंने आपको जैसे बताया कि वो
फ्रॉम रिसीविंग एन ऑर्डर टू स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन के दरमियान में जितना टाइम होता है वो वेट टाइम कहलाता है. Then inspection time is the time which is used to inspect or to use to check the product whether it is up to standard or up to quality. तो जो वो quality check time होता है उसको हम लोग inspection time बोलते हैं. तो ये हमने कहा कि ये this is 0.4 days, ये days में है 0.4 days. And then it is process time, that is 2 days. हम एक प्रोडक्ट को 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं. जो उनके ऊपर प्रोसेस होता है वो हम लोग 2 दिन में उसको कंप्लीटली फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो हम 2 दिन के अंदर प्रोसेस में कंप्लीट कर लेते हैं. देन देयर इज अ मूव टाइम. मूव टाइम इज द टाइम व्हिच इज यूज्ड टू move the product from one workstation to another workstation, from one point of work to the another point of work, or from one machine to another machine. And queue time is the waiting time which is used for waiting of work on a particular unit. एक यूनिट के ऊपर जो काम करने के लिए उस प्रोडक्ट को, उस यूनिट को क्यू में लगना पड़ता है, उसके लिए वो जो टाइम होता है उसको हम क्यू टाइम बोलते हैं. दैट इज 5 days. गुड्स आर शिप्ड एज सून एज प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. तो हम उसी वक्त प्रोडक्शन जब भी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग इस प्रोडक्शन को शिप कर देते हैं. मीन हम स्टोर नहीं करते हैं, हम अपने पास वेयर हाउस में चीज को नहीं रखते हैं. सो we have to compute throughput time, manufacturing cycle efficiency, and what percentage of production time is spent in non-value added activities, and compute the delivery cycle time. So these are 4 requirements जो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे. Okay. So for the calculation of our requirement, the time, first requirement is throughput time, which is also called manufacturing cycle. So throughput time is the time required to run raw materials into completed product. When raw materials, the time which is taken to turn the raw material into completed product or finished product, that time is called throughput time or manufacturing cycle time. So the time which is used to convert the raw materials into finished product, that time is called throughput time or manufacturing cycle time. This basically gives us the picture that how effectively we have utilized our time for the production, and how what was the inefficiency or wastage of time in our operations. इससे हम लोग ये वाली चीज कैलकुलेट कर पाते हैं. So here we have certain terms which is included in throughput time. That is process time. Process time is the time for work is actually done on the product. जो actual work product के ऊपर किया जाता है उसके लिए जो time लगता है, that is called process time. If we take an example of a manufacturing of a product or manufacturing of a chair in manufacturing organization in furniture, so the time which is used, which is consumed by a worker to work on that particular chair or order of chair, for example on cutting, on assembling, and on finishing of that chair, that time will be called as process time. So then it is inspection time. Time spent to ensure product is not defective. When we check the quality of the product and when we check that
the product is up to mark or it is not defective, that time is called inspection time. Then there is move time. The move time will be the time required to move materials or partially completed products from workstation to workstation. तो जो workstation to workstation move करने के लिए जो हम लोग टाइम यूज करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट्स और 1 आवर जो भी टाइम लगता है तो उसको हम लोग मूव टाइम बोलते हैं. Then it is queue time a product spent waiting to be worked on. कुर्सी की हमने कटिंग करनी है लेकिन जो अब हमने मटेरियल पीछे रखा हुआ है और पहले उस मशीन के ऊपर काम हो रहा है दैट इज नॉट फ्री, तो उसके लिए जो टाइम जो है वो कंज्यूम होगा फॉर वेटिंग उसको हम लोग क्यू टाइम कहेंगे. व्हेन वी हैव स्पेंड सम वेटिंग टाइम ऑन द प्रोडक्ट टू बी वर्कड ऑन, तो उस टाइम को हम लोग क्यू टाइम कहते हैं. टू बी मूव्ड, टू बी इंस्पेक्टेड और टू बी शिफ्ट. फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि काम करने के लिए जब हमने वर्क स्टेशन पे पहुंचाया तो पहले ही उस पे काम हो रहा था, वो मशीन फ्री नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उसको क्यू में लगा दिया, तो वो वाला टाइम जो क्यू टाइम होगा. फिर हमने उसको मूव करने के लिए जब हमने मूव किया तो हमने कहा जो वो मूव करने वाला आदमी है जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो वाला जो है वो कोई और मटेरियल लेके गया हुआ था, तो इसलिए उसको फिर इंतजार करना कि वो आएगा तो उस मटेरियल को मूव करेगा, तो उसमें जो जितना टाइम लगा उसको हम क्यू टाइम बोलेंगे. टू बी इंस्पेक्टेड, जो इंस्पेक्शन करने वाला आदमी है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो और लोगों की और प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन कर रहा था, वो फ्री नहीं था, इस वजह से इस प्रोडक्ट को जो है वो वेट करना पड़ा कि भाई इसकी बारी आएगी तो फिर इसकी इंस्पेक्शन होगी, तो उसमें जितना टाइम लगा उसको हम लोग जो है वो क्यू टाइम बोलेंगे. एंड फिर हमने कहा जी शिपमेंट करनी थी और शिपमेंट के लिए जो हम ट्रक यूज करते हैं वो फ्री नहीं था, वो कोई और ऑर्डर या और शिपमेंट लेके गया हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्यू टाइम में लगा दिया कि जब वो ट्रक आएगा तो वो फ्री होगा तो इसको जो है वो शिप करेगा, तो इसलिए जो हमने इंतजार किया. तो जब भी किसी भी स्टेज के ऊपर जब हम लोग वेटिंग टाइम स्पेंड करते हैं, वेटिंग टाइम जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, तो दैट वेटिंग टाइम इज कॉल्ड क्यू टाइम. So the formula to compute throughput or manufacturing cycle time is equal to process time plus inspection time plus move time plus queue time. In our example, throughput time will be equal to, in process time is 2 days, which is given in our question. In move time is 0.4 days, mean 0.4 of 1 day, mean 0.4 days, not a complete day, but this is 0.4 day, this might be in hours. So then it is queue time, that is 0. Sorry, pehle hai process time, that is 2 days, then it is inspection time, that is 0.4 days, then it is move time, that is 0.6 days, and then it is queue time, that is 5 days. When we add up all these, it is 8 days. So we may say that throughput time is 8 days, or we must say manufacturing cycle time is 8 days. It means that we have taken 8 days to complete a manufacturing process. जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने में हमें टाइम लगा वो 8 डेज था, जिसमें से जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्टिव काम हो रहा है वो सिर्फ 2 डेज है, बाकी जो 6 दिन हैं वो क्या लग रहे हैं, इंस्पेक्शन, मूव, क्यू एंड सो ऑन, इस तरह के ऊपर लग रहे हैं. तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम था वो हमने कितना लगाया और नॉन प्रोडक्टिव टाइम हमने कितना लगाया, इससे हम अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं. इफ वी हैव दिस पिक्चर कि हाउ मच टाइम वी हैव इन प्रोसेस एंड हाउ मच टाइम वी हैव इन अदर एक्टिविटीज, तो वी कैन एलिमिनेट दोज टाइम्स एंड कैन improve our
operating efficiency. Okay, now this is delivery cycle time. So delivery cycle time is calculated as wait time plus throughput time. जब हम वेट टाइम में थ्रूपुट टाइम ऐड करते हैं तो हमारे पास डिलीवरी साइकिल टाइम आ जाता है. सो वी हैव वेट टाइम इन 17 days and throughput time just we have calculated that is 8 days and it comprises of 25 days. So delivery cycle time is 25 days. So delivery cycle time is basically the time from placing an order to dispatching of that goods to the customer. एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया और उसको जब हम लोगों ने डिस्पैच किया उसके दरमियान जो लैग ऑफ टाइम है दैट इज कॉल्ड डिलीवरी साइकिल टाइम. और इससे हम ये देख सकते हैं कि हम अपने एक ऑर्डर को कितने दिनों में फुलफिल कर रहे हैं, कितने दिनों में हम उन ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं. इफ वी हैव अ लार्ज फिगर दैट इज अलार्मिंग, इसमें जो ज्यादा दिन लगेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है. तो इसलिए हम लोग इसको रिड्यूस करके अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं. दिस टाइम इज एन इम्पोर्टेंट कंसर्न टू मैनी कस्टमर्स. बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो इसके ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, वो इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं बिकॉज दे वुड लाइक टू लाइक द डिलीवरी साइकिल टाइम टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो उसको जो भी ऑर्डर वो प्लेस करे तो एज सुन एज पॉसिबल उसको वो वाली ऑर्डर जो है वो मिल जाए बिकॉज उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा होता है. तो जो कंपनीज अपने इस डिलीवरी साइकिल टाइम को मैनेज करती हैं वो अपना एडेड एडवांटेज हासिल कर सकती हैं ओवर द अदर कंपनीज. तो अपने ऑपरेशंस को बेहतर बना के हम इनको कम करके अपने कस्टमर्स को विन कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं एंड वी कैन गेट कंपेटिटिव एडवांटेज जो कि इस वक्त जो है वो बहुत सारी कंपनीज के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है. सो कटिंग द डिलीवरी टाइम मे गिव अ की कंपेटिटिव एडवांटेज. जब हम लोग अपने डिलीवरी साइकिल टाइम को शॉर्ट करते हैं तो इट गिव्स अस सर्टेन बेनिफिट्स एंड इट गिव्स अस कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर कंपनीज, अदर कंपेटिटर्स. और उस लिहाज से हम अपनी जो है एफिशिएंसी को बेहतर बना के अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं. और जो इस पे फोकस नहीं होते डेफिनेटली उनके लिए सर्वाइवल के इश्यूज हो जाते हैं, वो अपने बिजनेस को लूज कर सकते हैं. सो देयर वर द टू टूल्स. Then there is manufacturing cycle efficiency. Manufacturing cycle efficiency is equal to value added time, which is process time, divided by throughput time, which is also called manufacturing cycle time. So throughput time is basically a key measure in delivery performance. जब हम लोग डिलीवरी की परफॉर्मेंस या डिलीवरी डिपार्टमेंट की या डिलीवरी ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें थ्रूपुट टाइम जो है वो एक की मेजर होता है and can be put into better perspective by computing the manufacturing cycle efficiency. और हम इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से क्या आप समझ लें कि उसको बेहतर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इफ वी कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. हम ये देखें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की एफिशिएंसी क्या है, हाउ मच इफेक्टिवली वी आर यूजिंग आवर टाइम. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी बेसिकली कैलकुलेट करती है कि हाउ इफेक्टिवली वी आर यूजिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड हाउ इफेक्टिवली आवर मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज यूज्ड. तो वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. सो थ्रूपुट टाइम इज डेफिनेटली अ की मेजर इन डिलीवरी परफॉर्मेंस. लेकिन उसमें से हम लोग अपनी एफिशिएंसी को जब कैलकुलेट करना होता है तो फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी टाइम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है. MCE is computed by relating the value added time to throughput time. Basically, this is a ratio
which is computed by comparing value added time with the throughput time or with the manufacturing cycle time. So its formula is manufacturing cycle efficiency is equal to value added time, which is process time, divided by throughput time, that is manufacturing cycle time. A non-value added time results in an manufacturing cycle efficiency of less than 1. जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम होता है वो बेसिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को A1 से कम कर देता है। अगर हम लोग बिल्कुल परफेक्टली एफिशिएंट हैं तो इट विल बी 1। अगर हम लोग मुकम्मल तौर पे अपने टाइम को जो है वो फुली वैल्यू एडेड कर रहे हैं और फुली हम अपने टाइम जो टाइम है हमारा वो वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी प्रोडक्ट के अंदर और हम उसमें से कोई भी चीज कोई भी टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, एवरी सेकंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज बेसिकली adding value to the product, then we will say that our efficiency is 100%, mean that is 1. But this is not practical. Practically क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, मीन 100% कभी भी नहीं होती है। ओके, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम होता है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को कभी भी 100% नहीं होने देता। an MCE of 0.5 for example, that is 50%। जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अगर 0.5 आती है, for example, would mean that half of the total production time consists of non-value added activities। तो जो 0.5 की फिगर है, that means कि 50% of the manufacturing cycle time is non-value added time and 50% is the value added time। सो वैल्यू एडेड टाइम तो बहुत ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है अगर वो हाई होगा तो हम इनएफिशिएंट होंगे, एंड इफ द नॉन वैल्यू एडेड टाइम इज लो देन वी विल बी एफिशिएंट। सो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कि वेदर वी आर एफिशिएंट एंड वेदर वी आर एफिशिएंटली यूजिंग आवर टाइम, we calculate manufacturing cycle efficiency ratio। तो इसको लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। In many manufacturing companies, the MC is less than 0.1, that is 10%, which means that 90% of the time in a unit a unit is in process is spent on activities that do not add value to the product। So when manufacturing companies जो हैं जिनका जो efficiency है वो 10% है, तो ये बताता है हमें कि 90% of the time which is spent on one unit that is involved in non-value added activities। इट मीन्स कि वो जो हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ हमारे पास 10% हैं और बाकी जितनी भी 90% जो हैं वो हमारे पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और हमारा टाइम जो है वो 90% टाइम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में स्पेंड हो रहा है। तो MCE in our example will be value added time divided by throughput time। We have value added time is 2 days and throughput time we have calculated that is 8 days। When we divide 2 by 8, this is 0.25, which is 25%। So our manufacturing cycle efficiency is 25%। It means our value added time is 25% and our non-value added time is 75%। It means we are working on a product and spending 25% of the time of our production cycle on value addition of the product, and 75% of the time is spent on the product in non-value added activities। So we need to be focused on this 75% time and we should reduce that time so that our manufacturing cycle efficiency is increased। हम अपने टाइम को
एफिशिएंटली यूज करना चाहें तो फिर हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के ऊपर लगने वाले टाइम को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और उसको जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और आप ये देखें कि जब आजकल चूंकि हम कॉस्ट कंट्रोल से नेक्स्ट की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि वी शुड मैनेज द कॉस्ट। Nowadays companies are focusing on managing the cost, and for the management of the cost, managing cost mean we have to reduce our cost। हमें उसी कॉस्ट पे काम नहीं करना, हमने इसको कम करना है। For the reduction of the cost we eliminate our non value added activities और non value added time। जब हम non value added time को एलिमिनेट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट भी एलिमिनेट होगी, और उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी। व्हेन वी स्पेंड लेस टाइम डेफिनेटली वी विल हैव लेस कॉस्ट, दैट्स व्हाई विल आवर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी विल इंप्रूव। और इन द लॉन्ग रन, और यू मे से ऑन द अदर साइड ऑफ फाइनेंशियल्स, आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल आल्सो इंप्रूव। सर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो थ्रूपुट टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन सर हमने थ्रूपुट फार्मूला में ये पढ़ा है कि हमारा जो प्रोसेस टाइम होता है वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, अगर वो ज्यादा होता है वो हमारा बेस्ट है। अब आप जरा गौर करो कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है इसका न्यूमरेटर क्या है? सर वैल्यू एडेड प्रोसेस टाइम, प्रोसेस टाइम, वैल्यू एडेड टाइम। तो हम ये कहते हैं ये ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन ये ज्यादा किसके मुकाबले में ज्यादा होगा, ये भी तो बात हो रही है ना। ये आइसोलेशन में तो हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? थ्रूपुट टाइम, बाकी जो हमारा सारा थ्रूपुट टाइम के साथ। अब थ्रूपुट टाइम में एक और बला भी बैठी हुई है, कौन सी? सर नॉन वैल्यू एडेड जो हमारी चीज होती है। बिल्कुल सही बात है। अब थ्रूपुट टाइम, जब वैल्यू एडेड टाइम ज्यादा होगा तो थ्रूपुट टाइम भी तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। जी सर। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ एक चीज है, लेकिन डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, एक वैल्यू एडेड टाइम भी और नॉन वैल्यू एडेड टाइम। नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैल्यू एडेड टाइम और नॉन वैल्यू एडेड टाइम की रेशियो को कम करें, वैल्यू एडेड टाइम को बढ़ाएं और नॉन वैल्यू एडेड टाइम को कम करें। इससे क्या होगा, आपकी ये वाली रेशियो इंप्रूव कर जाएगी। तो ये इंप्रूव तभी करेगी, हम ये कहेंगे, जब आप अपने नॉन वैल्यू एडेड टाइम को कम करेंगे। वैल्यू एडेड टाइम को बढ़ाएंगे तो बेटे नीचे भी बढ़ जाएगी, ऊपर भी बढ़ जाएगी। जी सर, समझ लग गई है। ठीक है, तो इसलिए एफिशिएंसी तभी आएगी जब हम अपने नॉन वैल्यू एडेड टाइम को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, कम करेंगे।